यार क्यू कार्ड कैसे इतनी जल्दी मैं आंसर बनाऊं? गलत हो गया तुम्हारा। यार क्यू कार्ड कैसे इतनी जल्दी आंसर बनाऊं? मैंने कहा भी था इस बुक से पढ़ लो, इस पे आंसर लिखे हुए हैं। 10 मिनट में कैसे पढ़ लूं इस बुक से? चलो कोई बात नहीं। Assalamu alaikum, welcome to another video. I am Ahmed, leading the IELTS and PT department at Edify Group of Companies. Today's video is very special. आज हम लाए हैं एक मॉक सेशन स्पीकिंग का, और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक मेरी बहुत खास कोलीग हैं. Welcome to the video, Rida, and why don't you give audience a formal introduction of yours? Yes, my name is Radha and I am University and Embassy Interview Instructor at Edify Group of Companies. Alright, thank you so much. I hope कि बहुत सारे लोग आपको already जानते होंगे, but thank you for the formal introduction. तो एजेंडा बड़ा सिंपल है. हम एक मॉक टेस्ट करेंगे स्पीकिंग का. Rida would be the candidate and I'll be asking question as an examiner, और वो मुझे आंसर करेंगी उन क्वेश्चंस के, और उसकी बेस के ऊपर हम उनकी मार्किंग करेंगे और उनको फीडबैक देंगे. आप लोग वो फीडबैक सुन सकते हो और उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, और आपको थोड़ा सा पता ये चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि स्पीकिंग के अंदर मैटर करती हैं, कौन सी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं. ऑलराइट, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, या शुड वी स्टार्ट मतलब द सेक्शन एंड ऑल दैट? Yeah, I know that there are 3 sections inside in IELTS exam, but I don't know about the IELTS test because I have never prepared for it. चलें, कोई बात नहीं, आज आपका इम्तिहान है तो देखते हैं. Although you are correct about unseen examination. जी, although you are right about the 3 sections. First section जनरल क्वेश्चनिंग के लिए डेडिकेट होता है. सेकंड के अंदर एक लॉन्ग रन टॉपिक होता है जिसमें आपने 2 मिनट तक बोलना होता है, उसको हम क्यू कार्ड बोलते हैं. और फिर थर्ड सेक्शन में उसी क्यू कार्ड में से फॉलो अप क्वेश्चन किए जाते हैं और आपने उसके आंसर देने होते हैं. Okay. तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 1 से. और सेक्शन नंबर 1 में आई वुड फर्स्ट लाइक टू टेक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स. Okay, so my name is Rida Kazmi and I am from Faisalabad, Pakistan. I have graduated from GC University Faisalabad and now I'm working in Edify Group of Companies. All right. How long have you been working? I have been working there from the last 1.5 years. All right. What do you really like about your company? My company environment is very positive. And this company gave us a lot of chances to grow. So I love this thing about my company. All right. So currently you are, whatever you are doing, if you could change your career, what other career would you like to pursue? Other than Edify? Other than, I don't think about it. Other than preparing for the people for interview, if you could change your career to to entirely different field, what that would be? It would be my previous workplace, which was reporting career, journalism. All right. So what is one thing that you really like about your hometown? My hometown is Chennai, and it's famous for its furniture industry, which is wooden furniture, and it's famous all around the world for its furniture industry. All right. What is one thing that you would like to change about your hometown? I don't want to change anything about my hometown because I love my hometown, and one thing is very special about my hometown, that we have a river near hometown, which is Chenab River, and it's very amazing. There are hills, there is river, and I love that view. All right. Do you have a large circle of friends or a smaller circle of friends? I'm an introvert person. I don't have much friends. I have a couple of friends, maybe. All right. Do you think introverts can be good leaders? Yeah, introverts can be good leaders because they think a lot, and they make strategies without saying anything, and they say things when it's needed. All right. Do you like to make other introvert friends or extrovert friends? No, I love to make friends. I don't think it's really matters that they are introvert or extrovert, but I love to make friends. All right. Thank you so much. That was the end of the first section. It was the journal questioning. अगर हम थोड़ा सा फीडबैक की बात करें तो the good point were the fluency was good. You were quickly getting the ideas, और आपके ideas अच्छे थे और आप उसको अच्छे से जवाब दे रही थी. कभी कभार हम इन जनरल क्वेश्चनिंग में थोड़ा सा लेंथी आंसर कर जाते हैं, कभी छोटा कर जाते हैं. तो एक कॉन्शियस एफर्ट जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं वो ये है कि
एक स्पेसिफिक लेंथ डिसाइड कर लें कि मैंने 1-2 सेंटेंस का आंसर देना है और मैंने उसी विंडो में रहना है, तो फिर ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता, क्योंकि जब आप बात थोड़ी सी ज़्यादा लंबी कर लेते हैं तो अक्सर उसको समेटना मुश्किल हो जाता है, वर्ड्स कम पड़ You जाते हैं. can it is difficult to conclude your answer. Yes, difficult to conclude your answer, and if you do not have a lot of vocabulary and not it will be a good difficult of for the a fluent, student which will become quite tough, which is right? using basic English and who is Of just course. starting the English learning. Exactly. तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमेशा यही सजेस्टिव है कि थोड़ा सा कम बोलें, लेकिन अपनी प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें. तो फर्स्ट जनरल क्वेश्चनिंग में सबसे ज़्यादा फोकस इसी चीज़ के ऊपर करना होता है. और अगर हम बात करें कि कितनी ड्यूरेशन का होगा ये फर्स्ट सेक्शन, तो फर्स्ट सेक्शन सबसे कम ड्यूरेशन का होगा. इट विल बी हार्डली अराउंड 1.5 मिनट और 2 मिनट्स, और उसके बाद फिर वो क्यू कार्ड पे आ जाएंगे. सो फार सो गुड. Now let's move towards the cue card, which is the second part of the speaking. And the topic that I want you to prepare your answer is describe a good piece of advice that you have recently received. All right, Rida. So your time for the cue card starts now. Okay, so a very good advice I got from my friend that I have to work on 75 days challenge. In this challenge, I have to do 6 things which are related to my health and fitness, in which I have to exclude junk food from my daily routine, and I have to pray regularly, and I have to read a page of any documented book or anything. I have to cut off the digital appliances like my phone, my laptop for 1 hour daily, and also I have to drink 4 liters of water daily. So these are the advices which my friend given to me, and I have to do it for the 75 days, and it will make me. And one more thing I just forget to mention it. I have to go for a walk or running during these 75 days. All right. Thank you so much. So not a bad time. Feedback. So for the students would be कि normally आपको मैं एक मज़े की चीज़ बताता हूँ कि हम एक structure follow करते हैं, उसको हम कहते हैं SOS model, which is situation, and then there is an obstacle, and then there is a solution. Okay. जब भी आपने किसी क्यू कार्ड को, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम 2 मिनट तक कैसे बोलें, वो भी कि ऐसे टॉपिक पे जो हमें इतना रिलेटेबल भी ना लगे और उसी वक्त आए ना. तो कोई भी क्वेश्चन आता है, आपने उसकी स्टोरी ऐसे क्रिएट करनी है कि पहले आप थोड़ा सा सिचुएशन की बात करें, फिर उसमें कोई ऑब्स्टेकल ऐड कर दें, और फिर उसका सोल्यूशन, उसका रेजोल्यूशन आ जाए. सो फॉर इंस्टेंस अगर आप हेल्थ के बारे में बात करती हैं और आपको कोई एडवाइस मिली, तो सबसे पहले सिचुएशन क्रिएट करें कि आप बहुत ज़्यादा इन दोनों कॉन्शियस थी कि आपने अपने हेल्थ के ऊपर काम करना है, मे बी बिकॉज यू वर स्टार्टेड गेनिंग अ लिटिल वेट एंड ऑल दैट, और उसके बाद फिर उसमें कुछ ऑब्स्टेकल डालें. Okay, so you have to start from the situation. Yes. In which you are relying. Exactly. I have emphasized this many times to my students कि आप कभी भी क्वेश्चन के आंसर से स्टार्ट नहीं करते हो, क्योंकि फिर तो कम वर्ड्स रहेंगे ना आपके पास. तो, I just given the answer of your question. हाँ जी. आप अगर थोड़ा सा वो कॉन्टेक्स्ट ऐड कर लेंगे, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो काफ़ी टाइम मिल जाएगा टू आंसर द क्वेश्चन, और आपको पता भी नहीं चलेगा, 2 मिनट आराम से हो जाएंगे. ठीक है. और फिर एक ऑब्स्टेकल ऐड करके और फिर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें. एंड इफ़ यू कैन डू दीज 3 थिंग्स, सिंपल थिंग्स, कोई मसला नहीं आएगा कि आप आराम से क्यू कार्ड के ऊपर 2 मिनट बोल सकेंगे. ओके, राइट. आपका कोई क्वेश्चन? मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है कि क्या हम अपना जो जब आंसर कर रहे होते हैं, हमने क्यू कार्ड बनाया होता है, हमने उसमें पॉइंट्स मेंशन किए होते हैं, क्या वो हम देखकर आंसर कर सकते हैं? अगर हमारे माइंड से जैसे स्किप हो गया था, मेरे माइंड से एक पॉइंट स्किप हो गया था कि हमें वाटर पीना चाहिए डेली 4 लीटर्स, तो क्या हम पेपर से देख सकते हैं? ऑफ कोर्स देख सकते हैं. वहाँ पर पेपर और आपको पेंसिल दिया ही इसलिए जाता है कि आप नोट्स बना सकें और देख सकें, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप एक स्क्रिप्ट लिख लें और ऊपर से देख के आप बोलते जाएं. यू जस्ट नीड टू नोट द पॉइंट्स. यस, ओनली पॉइंट्स. और अगर कहीं आपको लगता है अपने पॉइंटर्स को देखना है पेज के ऊपर, तो गो फॉर दैट, कोई मसला नहीं आएगा, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. Right? So let's move on towards the third part, which is the follow questions. Yeah. And this is normally the longest part of IELTS speaking. इसके अंदर एग्जामिनर जो है वो काफ़ी डिटेल क्वेश्चन पूछते हैं. तो let's start from, so what did you learn from the advice that you received? I learned that I have to work on my health, and I have to do some changes in my regular routine.
which will make my life more and much better. All right. And did you find this advice helpful? Yeah, it's really helpful because through this advice I can be more hydrated. I will be regular for my prayers, and it will make me a good person and physically fit person. Do you normally like to give your opinions? Yeah, sometimes I like to give my advice to the people which I love to talk, and otherwise I don't give people advice. I just say, I just give my opinion to the people which are near to me. All right. In your opinion, how do you think technology is changing education? Yeah, technology is playing a very important role in a person's life, because through technology in our childhood we don't use phones, and we are unaware of lots of things which are available on internet, and during our university we get our phone from our family, that we have to read our work on our assignments and all, so they give us our phone and we search a lot. As you know that in MPhil we have to conduct a research. So for this research we have to use the Google Scholar, which is available on internet. So All right. technology is playing a very vital role. Which is your favorite social media app and why? I think it's TikTok, because it's entertaining, and we can spend a lot of time on that. All right, thank you so much. So for the follow-up questions, एक बहुत ज़्यादा जो कंसर्न हमेशा आता है ना, वो रिदा ये आता है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या ज़रूरी है कि जो क्यू कार्ड का टॉपिक था आंसर सारे उसी से रिलेटेड होंगे या नहीं. तो इसका एक्सटेंडेड आंसर है कि ज़रूरी नहीं है. ये एग्जामिनर टू एग्जामिनर वेरी करता है और सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है. मतलब अगर कोई बच्चा क्यू कार्ड के अंदर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर उसी से रिलेटेड बार बार चीज़ें पूछी जाएंगे. Yeah, you didn't even ask me about my Q card. Yes. You just asked one question, I think, जो from the first, Q card. हाँ जी Yeah. बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन. उसके बाद मैंने उसको चेंज कर दिया और फिर हम उसमें टेक्नोलॉजी ले आए और सारा कुछ. तो वो अक्सर अचानक से ऐसे कोई बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पिक कर लेंगे ताकि वो ये देख सकें कि आप एडहॉक उसके ऊपर आंसर्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं. ठीक है. दूसरा एक लेंथ का ख्याल रखना होता है. जैसे जर्नल क्वेश्चनिंग में मैंने कहा था कि एक स्टैंडर्ड छोटी सी लेंथ है. इसमें कुछ आंसर्स थे जो आपकी पसंद के आंसर्स थे, वो आपने काफ़ी लंबे कर दिए. ठीक है. व्हेन आई आस्क्ड अबाउट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, दैट वाज अ वेरी लॉन्ग आंसर. तो आप उसको थोड़ा सा कंसाइज कर सकते हैं. एंड वन लास्ट थिंग इज for the people who want to score higher above 6.5 band, like for 7 and for the 8, उनके लिए 3-4 चीज़ें I would say is very important. Obviously first is the fluency. उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए. उसमें जितना कम ब्रेक आएगा उतनी अच्छी बात है. नेचुरल पॉजेस थोड़े बहुत आ सकते हैं बट बहुत लंबे पॉजेस नहीं आने चाहिए. Is my fluency is good? Yes, but it was fine. It was fine. The second thing is vocabulary. Your vocabulary was normal. It wasn't basic, but it wasn't extraordinary as well, right? So इसमें अंदर आप थोड़े से exceptional words अगर use करें तो आप फिर वो 7, 7.5 या even 8 तक जो है वो जा सकते हैं. Okay, right now how much I get? I don't want to tell in front of the Okay. camera. The last thing, which is very very important, is to staying relevant. Yeah. ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है. बाकी दो से भी I think ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है कि क्वेश्चन I'm relevant. Yes, you were relevant. So that is a good point. Whatever that is being asked, चाहे वो जर्नल क्वेश्चन है, क्यू कार्ड है, फॉलो अप क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर जब तक आप प्रॉपर नहीं दोगे ना तो वो irrelevant अगर है तो it doesn't really matter कि वो कितना ज़बरदस्त है. वो ये बताता है कि स्पीकर की जो है ना वो कॉम्प्रिहेंशन कम है. ऐसा ही है. ठीक है. आपको समझ ही नहीं आया इसलिए आपने गलत रिस्पॉन्ड किया, तो आपने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है. सो आई थिंक यू डिड अ रियली गुड जॉब एंड थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी मेक दिस लेसन ताकि स्टूडेंट सीख सकें. And thank you so much for watching the video. I hope this was helpful for you. If you want to know more about IELTS, PT or any other language test, you can reach out to Edify Group of Companies. I'll see you in the next video. Thank you so much. Allah Hafiz.